thank you very much. And without further ado, I would like to introduce you to today's second speaker. He gave a talk yesterday also. It was regarding the good premix procedure, and now he will be talking on feed mill design and processing. Mr. Harjot Singh from Lark Engineering. He is a business head at Lark Engineering Company India Private Limited with more than 12 years of professional experience in feed industry, and he is providing innovative solutions to feed millers to achieve maximum efficiency from machines and best quality in most economical way, and to make them aware regarding the process parameters, safety, and hygiene practices. So, Dr. Harjot, sorry, Mr. Harjot Singh, now the time is yours. Now the floor is yours. Please move ahead with your presentation on the feed mill design and processing. Thanks a lot, Vivekji and Pet Nepal team. Yesterday, we had a discussion over the quality premix procedures to enhance the feed performance. And today, we will discuss regarding the. I will share my screen. If the screen is visible, sir? Yes. Yes, sir. Sir, today we will discuss regarding the feed mill design and feed processing. Let me give you a brief outline of today's discussion. Firstly, we will discuss regarding a general feed mill process, starting from the batching, grinding, mixing, then conditioning, pelleting, crumbling, screening, and bagging. Then after the process parameters, we will discuss regarding a general feed mill layout, that the factors we have to keep in mind while installing a feed mill, and what ideal space we required for the warehouse, for the boiler, for the utilities, for the vehicle, for parking and office construction, etc. And what will be the ideal size of a warehouse with respect to the capacity of the feed mill. Then we'll discuss regarding the process parameters, that what will be the parameters required in batching, then and grinding the micron texture of the grains, then the mixing, then like in pelleting, conditioning, and bagging. From there, we can compare the efficiency and the quality of the machines. Like we can say, like in general discussion, we generally says that German machines are better than these machines, or we compare the name of the brands. But it is better if we compare the process parameters and the of the different machines, and the quality parameters that we compare, like from that hammer mill, that is the tip speed, that is the gap adjustment setting, that is the texture, that is the power consumption, maintenance cost. Then we can compare all these machines and the process parameters of the feed mill. Then the fourth one is the role of preventive maintenance. As we all know that stitch in time saves 9. So maintenance is an important part of feed mill management. So how we can save our money and enhance the feed quality by scheduling a preventive maintenance. So we'll discuss regarding that. Then a very important part of a feed mill, dye life and dye selection. Because we know all that the dye behaves differently in different parameters and with different formulation. Like layer feed and the breeder feed is hard in formulation, having calcite, fiber,
and less oil content. And broiler feed is very soft, having a soft formulation with good oil content and rich in nutrients. So different dye gives different output, PDI, and life with respect to the formulation. Then we will discuss regarding that how we can select the dye configuration with respect to the formulation. Then the other one is the cost of production, that what will be the total cost of producing pellets. That includes fixed and the variable cost. Fixed cost like the boiler fuel, electricity, the labor, and then gunny bags and consumables like hammers, dyes, and other things. That what will be the total cost of producing the feed. Then a very important part, process loss or shrinkage, that how we can calculate the process loss, and what is the how to keep the shrinkage and process loss calculation in the complete budget. So we have a brief overview over this. Let me start with the first one, the feed mill process. This is an aerial view of a feed mill, cattle feed plant. Generally, the process is almost same. There is few process and the formulation changes in poultry and cattle feed. We'll discuss in general regarding the feed mill process. Here, this is a process flow diagram of a general feed mill. Here we can see the first part is the intake chain conveyor that drags the material uh, at the bottom of the first elevator, and the first elevator conveys the material to the roti distributor and the batching bins. Before the roti distributor, there is a jute remover or drum siever that filter all the cobs, jute from the gunny bags, and there is a magnetic filtration system that catches the iron impurities present in the grains. This is a view of a warehouse having different raw material ingredients on both side of the chain conveyor. Excuse me, sir. Sir, are you Yes. explaining picture? Are you speaking on the picture? Yes, sir. But I'm sorry if others are seeing or not. I'm unable to see the picture. Still, the word document is shown. Oh, Yeah, sorry. yeah. So maybe you need to. If it is another file, maybe you need to share that. You see only the word file. Yeah, word file. One second. Now. Yeah, yeah. Please go from the first picture, sir. First picture. Okay, okay, okay. I'm really sorry for the. No problem. Now you can see a aerial view of a feed mill. Yes, sir. Yes. Yes, this is the aerial view of a feed mill. Generally, this is a cattle feed process. Process is almost same. There are few formulation changes and the process changes that we can discuss later on. But I am discussing regarding a general feed mill process, starting from the batching to the end process, that is bagging. This is a process flow sheet of a feed mill. The first part is the intake chain conveyor that drags the material
to the bottom of the intake elevator, and that intake elevator conveys the material to these storage or day bins or batching bins. Before going to the batching bins, there is a jute remover or a drum seat that filters the cob, stones, or the jute present in the gunny bags. Then, with the help of this magnet filtration system, we can catch the iron impurities present in the grains. This is a view of a warehouse. A different material stacked here, like the gunny bags are there for, and at both side of the chain conveyor. This is the chain conveyor with different dumping points. From these dumping points, we can pour the material with respect to the PLC command. For example, this is soya DOC, and the nearest dumping point is this one. When the PLC technician commands the labor that you have to put the soya DOC from this area, simply they drags the bag and pours into this dumping point. Likewise, this material can be dumped from this point. So there are different dumping points near to each and every material stacked in the warehouse, from where we can do the batching process. Like this intake chain conveyor. One thing more, the new innovation or that we introduced in the intake chain conveyor is the overload control mechanism. Like if there is jamming in the intake elevator and the labor have no idea that there is material stuck in the bottom of the intake chain elevator, but labor keeps on putting the raw material in the chain. What happened due to the jamming and the overload on the chain, there may be failure in the gearbox, the scrapers, or the shaft, or the chain moving parts. The weakest part may fail due to the jamming. What we introduced, we put one overload control mechanism here. That controls the that indicates if there is jamming, the flap will touch the limit switch and will trip the motor of the intake chain conveyor by giving a signal at the PLC room that there is something wrong in the intake and the batching process. You have to check the jamming to open the clear the jam, then again we restart the chain. That overload control mechanism is very simple. Even we can install this overload control mechanism in existing and old projects or projects of any company. Even the chain conveyor of any company, we can put this small. This is very cost effective, just a limit switch, a flap, and the hinge. Very cost effective thing that can reduce our maintenance cost and the running cost or the breakdowns of the intake chain, because the major part in the batching breakdown is the failure of the intake chain gearbox or the scrapers or the bending of the moving parts due to the pressure of the back pressure of the material due to the jamming at the intake elevator. So this is very crucial thing that we can check with our chain conveyors in the batching process. Then after the batching, this type, these are the different dumping hoppers from where we can put the respective material near to the dumping points. And one thing more to reduce the dust emissions, because there is the moving buckets of the elevator produces air, and that air released through the opening point of the intake chain, and there may be back pressure while putting the material. To control the back dust emissions from the intake chain conveyor, there is a modified design dump hopper that only material goes into down the intake chain. The back pressure of the air can be controlled with the help of this design. We can see that the dust here
chain and the elevator produces, the back pressure, this dust can be, while installing this aspiration system, the suction system, we can control all this dust in the feed mills. Then comes the intake elevators that conveys the material to the top, and with the help of the rotary distributor, we can fill the batching bins. The one thing more we can introduce, we can put in our elevators is the zero speed control sensors. Even if the belt of the elevators, there is a tightening mechanism in the elevator belt. With the time, the belt of the elevators elongated due to the elasticity, or with the time, the length goes on increasing by few mm or few inches. And if there is loose belt in the elevator, what will happen? Only the pulley will rotate and the belt will be stationary, because the top end of the elevator is the drive end, and the bottom is the driven end. So the motor is at the drive end at the top, and the bottom pulley only rotates due to the relative motion between the tightness of the belt and the pulley. Only the top pulley rotates by the motor, and the bottom pulley rotates due to the motion of the belt. If the belt is not enough tight, what will happen? Only the top pulley will rotate and the bottom pulley will be stationary, and the belt will not move, and the pulley will skid over the belt surface. Then what will happen? There is heat generation, there is a wearing of the rubber of the belt, and there may be failure or breakage of the belt, or even in some cases, if the heat is quite enough, then there may be some fire case in the elevator. To reduce that friction between the bottom pulley, what we will do, we can add one zero speed sensor at the bottom of the elevator that detects either the bottom pulley is in motion or not. If the bottom pulley is not in motion for few seconds, it judges the motion of the bottom pulley and gives the signal to the PLC, and automatically that trips the top motor of the drive motor of the elevator. That can save our belt, and after checking the belt, after tightening the belt and all process, we can restart the elevator. So this is the main thing that we can check with our elevators, that either we have this, or even with the existing and old elevators, we can put this system that can reduce, that can enhance the life of the belt, and the maintain, that also reduces the breakdowns and the maintenance cost of the elevators. Then this is the design of the pulley. We have to reduce the slippage, and we need maximum grip between the belt and the belt and the pulley. So we especially we check that there is a crown angle in the pulley, and also the cage type pulley will help in good friction and good movement of the elevator. Then comes the batching section. Then this is the batching section. These are the rotary distributors. Very important part in the feed industry, that the angle and the slope of the connecting ducts and chutes. The connecting ducts, chutes, elevators, the angle must be on a higher side, so that there is less material jamming and more life of the chutes and the ducts. You can see the angle of this distributor is even more than 70 degree, 65 degree, so that there is a free flowing of the material and very less jamming. Even in fibrous material like the cattle feed and other fibrous material, we have to check these angle of the chutes and the ducts.
And even this rotary distributor only works at 1 HP motor. Only 1 HP motor guides the material to all dosing bins. This is These are the dosing bins for different ingredients or grain, the maize, soya DOC, millet, gluten, MBM, rice polish, other products. These are the weigh hoppers based on the load cell. Automatically weigh hoppers, and these are the screw feeders. We just have to select the recipe and the number of batches as per the formulation with 0.25% accuracy tolerance. Automatically batch will come to this weigh hopper with the help of the load cell and these screw feeders. These are the weigh hoppers, and below weigh hoppers there is a dump hoppers to save the time and to enhance the capacity. When the batch completes, all at once the gate will open and the batch dumps to this dump hopper, and these weigh hoppers are ready for the next batching process. For the free flowing and grains, we generally use gravity feeders. For the fibrous material and the material with less flowability, we use these screw feeders. This is a view of a jute remover. Then there is a magnet cleaning system. Then this is the route distributor of the batching bins. And one thing more, even if we install 10 bins, 12 bins, 14 bins, 5 to 7% material we have to put manually at the grinder hopper, because there are some grains that not have the good flowability properties or very less in quantity. For example, 40 kg, 30 kg. There is limitation in the batching process that makes it the dose. I mean, a dose will be more than 40 to 45 kilograms for good accuracy. So those materials having less in quantity, like 30 kg, 40 kg, 45, 60, or not frequent. You need only in few recipes. You do not want to fill batching bin for those ingredients, or even those are not having good flowability properties, like the cotton seed cakes and the other cakes in the cattle feed, and fibrous material that is not having a good flowability properties in the bin. We have to add manually through the grinder elevator. But in that manual process, we have no idea that either operator skips the material or he puts into the grinder elevator with that sequence. For to control the accuracy and to maintain the PLC report even in manual dosing, we can put one extra hopper on load cells at the grinder elevator that can be synchronized with the previous wave hoppers, and all manual material can be monitored in PLC report with the accuracy that for example, we even instead of 30 kg, either he puts 32 kg or 28 kgs, we can have a complete record of the manual items in the PLC report. So that is a new feature to monitor the items or ingredients that we are adding manually to the grinder elevator. We can have a complete idea in the PLC report. Like this is a manual dumping screen. Here is the item name and the set weight. So the name displays at the screen, and as per the sequence of this PLC screen, the operator that is putting the material manually into the grinder elevator, he has to maintain the sequence as per the PLC screen, and everything can be recorded that instead of 80 kg, either he puts 82 or 84.
So that can be monitored and controlled even in the manual process. Then after batching, the next process is the grinding. One more innovation we did in the grinding process is the pre-mixing before the grinding, especially in cattle feed and poultry or broiler feed, having a quite good ratio of the fibrous and the grains. Hammer mill better performs if the fiber and the grain ratio is good and it is properly mixed, because it is very difficult for a hammer mill to grind the fibers at a fine screen. There may be some choking issues or heat generation. So the grain and the heavy density material will provide the inertia to the light material to passes through the screen, and the grains helps the fibers in grinding process. So to have a good grinding and a balance, and also when the grain comes, the load on the hammer mill increases, and when the fiber comes, the load on the hammer mill decreases. There may be pulsating load with respect to the grain hardness. So to have a good grinding and better grinding of the fibers also, what we do the pre-mixing before the grinding process for just 2 minutes. This is a vertical, conventional vertical mixer with some customized changes we put over the hammer mill bin that mixes the material, fiber and the grain equally before going to the grinding. That reduces the power consumption during the grinding process, and also the texture and the heat generation, because the grain absorbs the heat generated due to the impactness of the grinding. And so this pre-mixing of the grains and the fiber below the hammer mill increases the hammer mill efficiency, and also the reduces the operating cost of the grinding process. So before the after the pre-mixing, there is a buffer hopper of the hammer mill, and then there is a rotary vane feeder with the VFD. This rotary vane feeder motor is synchronized with the main motor of the hammer mill with the help of the VFD. When the load on the motor, for example, the power HP of the hammer mill is around 75 HP, say in 5-ton feed mill, or 150 HP in a 10-ton feed mill, and the ideal amperes of a 150 HP hammer mill is around 180, say 180 amperes, as the motor is of 2800 RPM. So 180 amperes. So what the rotary vane feeder will do, when the amperes of the hammer mill goes above the 180 amperes, it automatically slow down the feeding through this VFD and the rotary vane feeder. And when the amperes drops below 120 or 130, it automatically increases the RPM to enhance the feeding process. So the rotary vane feeder, with the help of the VFD, helps to control the feeding, the power, the safety of the motor, and the one more advantage the rotary vane feeder will do, when there is a power failure, all the material in the buffer hopper goes to the hammer mill chamber and blocks the screen, and the jams the complete hammer mill. So this rotary vane feeder cuts the material in case of power failure to avoid the leakage and the jamming of the hammer mill. So that is the purpose of the rotary vane feeder above the hammer mill. Then there is a hammer mill after the rotary vane feeder, to reduce the particle size as per the extra required. So this is a mixer above the hammer mill that we placed to mix the fiber and the grains. This is the hammer mill. The main feature a hammer mill should have the gap adjustment between the hammer tip and the screen, because for fine grinding we need less gap between the hammer tip and screen.
For more grinding, we need the more gap between the hammer mill and the screen, hammer and the screen. So there should be a optimum and the gap adjustment mechanism in the hammer mill to control the grinding process and to increase the efficiency of the hammer. Then comes the mixing process. This is the mixing process. At the top floor, we have two pre-mix hoppers where we can, as we discussed yesterday, that either we can put medicines in the mixer in a manual way, or we can auto dose with the help of the pre-mix dosing units. So these are the two pre-mix hopper at the top floor. We have to add the premix as per the recipe into these hoppers, and automatically as per the recipe and the PLC command, this medicine will goes to this mixer with the help of this chute. And here then comes oil dosing. Um, this is the oil tank from where we can dose the oils and liquids directly to these mixer. This is a double shot paddle mixer having CB less than 3 in 60 to 180 seconds. These are the premix. For example, we have to dose the DCP, LSP, common salt, or other items directly to the mixer. These are the premix dosing bins that can automatically dose the required premix or medicines or DCP, LSP, common salt directly to the mixer with the help of the PLC and the load cells. Everything designed for the medicines and the salts are specially designed in the stainless steel 304. This is the pelleting section. In case of cattle, there is a molasses blender where we can add the molasses with respect to the required percentage, and then there is a conditioning process. And one thing more that we recently introduced into the conditioning process is the hygienizer or retentioners. For example, today's requirement is of 60 or 70 seconds retention time. If any recipe or in future, if we need 80, 90 or 100-second retention time, we must have the adjustments in our machinery. So for that, we are providing two conditioners with direct steam addition and one retentioner with the help of the VFD. So with the help of the VFD, we can increase or decrease the retention time required as per the recipe and as per the suggestion as suggested by the nutritionists. So this is a molasses blender where from we can add the molasses directly to the feed. All these molasses blender, as molasses is corrosive in nature, we have to design the machines in stainless steel 304. Even you can see mostly conditioners are of single shaft, and the conditioner mostly runs at 40 to 50% filling level. Above 50% is open area, below 40 to 50% is the feed. As steam is light in nature, mostly covers the open part, and we need steam addition up to the last layer core of the conditioner. So it's better to have a double shaft conditioner. You can see the material movement in double shaft conditioner is like that. All material goes into the air and the steam at this, and this is the retentioner.
Retentioner is a rubberized long vessel. With the help of the VFD, we can even have the retention time up to 100 seconds. Then the pellet mill. We did few innovations with respect to the pellet cutting and the dust formation and PDI that we'll discuss later on in the next. And one thing more, for a uniform cooling, the design of cooler should be there are minimum corners, and the maximum we can have a good level, uniform level of the feed. So for to achieve a uniform level of the feed, we can have a rotary spreader, because up to 10 ton or 12 ton the cooler width, the material can be adjusted with the help of the umbrella. But if in big coolers, when the dia increases, it is very difficult for the umbrella to spread the material over the cooler level. So there we have to add the mechanical spreaders that spreads the material all over the area for more uniform cooling with less power and more efficiency. So to increase the efficiency and to have a uniform level, we are supplying circular coolers in the field. Previously, 10 years back, we supplied rectangular cooler, then octagon cooler, and now we are working over the circular coolers. Then the screening process. The main requirement of the screening process is the cleaning. As we are using 16, 18, 20, 22 mesh screens in the screeners, and the feed is having a bit moisture and the dust is there. So it is very difficult for a technician to goes to the top floor every 40-45 minutes and to clean the screen with the help of a wire brush. So auto cleaning screens helps to, you can see the vibrating balls, rubber balls are there to clean the screen automatically, so that they can work over 90 or 95% efficiency. In general, with less cleaning, the screens only works at 40 to 50% efficiency after 1 hour. Then your electric control panel must have all the features like the single phase, double phase prevention, reverse RPM prevention system should be there. The rating of the starters and the contractors should be as per the matching of the screens. And one thing more, even in the existing field mills, we can install separate energy meters for the pelleting and the grinding section. As we are well aware that the ideal power consumption of a feed mill in poultry would be around 24 to 25 units of per ton, excluding the boiler and the office other loads. So if the power consumption is on a higher side, so which section you have to look, either grinding or pelleting, or where we have to focus. So for to monitor the power consumption comparison, we are supplying separate energy consumption meters in batching, grinding, and mixing process. Batching, grinding, and pelleting process, as 80% power consumed by the pelleting and the grinding process, 80 to 85%. So we have to check that either hammer mill is running ideally or he is consuming idle power with respect to the production, or pellet mill is performing less with respect to the efficiency and the power consumption. So we can add the energy meters even in the existing panels with the help of our electricians to monitor the power consumption trend of our machines.
Then in PLC, the most important thing we introduced in PLC is MIS reporting system, and the second one is plant performance analyzer module. In general practice, what feedback we have from the feed millers, that in the day shift, in 10 hours or 10 or 12 hours, they are getting 80 90 ton at 80 or 90 metric ton of feed. In same time, in the night shift, they are getting 10 to 20% less efficiency. But efficiency in night would be more instead of the day, because there is less disturbance of the loading and unloading of the finish and the raw material. And mostly all feed millers run single recipe in night, so that because in night there is less awareness and less staff, responsible staff in the feed mills, so they, to avoid the chances of the cross contamination, generally they run single recipe at night. In single recipe and with less disturbance of loading and unloading, the efficiency would be more. But opposite, in night shift, generally feed mills are facing that low efficiency with respect to the morning shifts. So we did audits in feed mill. What we observed, not in each and every feed mill, in general, in few feed mills, what we observe, in night shift, the pellet operator generally runs the pellet mill at 80 or 85% efficiency to avoid the overflow of the cooler siren system. He want वो उतना freely काम करना चाहता है, he runs pellet mill at 80-85% भी उसको भाग दौड़ ना करनी पड़े. So in plant performance analyzer module, you can have an idea which machine is running at what ampere, at what RPM, at what time. You can have the complete trends in the graph. Even auto generated email you can have at your email ID morning at any specified time. Auto generated email you will get that is the performance of the plant. और अगर आप उनसे पूछते हैं कि परफॉर्मेंस कम क्यों आई, देन देयर आर अ डिस्कशन, सर पावर चली गई थी, मोटर ट्रिप हुई, जैमिंग लगी. फ्रॉम द ऑटोमेशन मॉड्यूल यू कैन हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट कितनी बार मोटर ट्रिप हुई, द मशीन परफॉर्मेंस, आरपीएम, एम्पेयर, ईच एंड एवरीथिंग. So from this MIS system we can have that complete idea. And the second new thing we introduced is the optimum life of parts. Like if we run the hammer beaters to more than their specified life, because the hammer beater corners, जो corners रहते हैं hammer mill beater के, वो राउंड हो जाते हैं कुछ समय बाद, एंड ड्यू टू द राउंड कॉर्नर्स द टेक्सचर ऑफ द फीड changes, and with the changes texture and the coarseness of the texture, there is more recycling, less conditioning, less steam and moisture absorption, and poor PDI, and more recycling would be there. So हमने हैमर बीटर को थोड़ा ज्यादा चलाकर हो सकता है 10 रुपए सेव किए, बट हमने उसका रिसाइकलिंग पावर कंजप्शन फीड क्वालिटी में बहुत लॉस कर दिया. सो इन दैट ऑटोमेशन सिस्टम हमने एज पर द लाइफ ऑफ द पार्ट्स, जैसे आपका हमारा गाड़ी में इंडिकेशन आता है, आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स यू हैव टू चेक द ऑयल, यू हैव टू चेक, लाइट ब्लिंक करता है. सेम इन आवर ऑटोमेशन सिस्टम, आफ्टर फ्यू टाइम आपको हैमर मिल बीटर चेक करना है, ग्रीजिंग चेक करना है, या क्रमडर रोज चेक करना है, वी हैव दैट इंडिकेशंस इन आवर सिस्टम. सो आफ्टर द स्क्रीनिंग, द लास्ट पार्ट इज द बैगिंग, वेयर वी कैन हैव we can fill the bag. And one more new thing we can have in the auto bagging system is the metal detector, because this is the metal detector. There may be nut and bolt or some iron particles even after the grinding or pelleting. किसी ने pellet elevator का maintenance किया और गलती से spanner और nut bolt छूट गया, then
पोल्ट्री में तो नहीं, लेकिन कैटल में ये बहुत एक बड़ा एक कांस्टेंट है, दैट नट बोल्ट एंड आयरन पार्टिकल्स इन द finished bags. So to detect the iron particles, we can place the metal detectors over there. With the help, we can check, and then after the metal detection, there is one more thing. The main issue the feed millers are facing, that the main issues the feed millers are facing, that the variation is in the bag. For example, आपने 50.100 kg 50 kg 100 grams you have set in your bag. अभी आपका रेसिपी चेंज हुआ ड्यू टू द इन फ्लाइट मटेरियल एंड द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल. हमारा जो बैग वेट चेंज हो गया, तो वो 50 किलो 100 ग्राम की जगह 50 किलो 200 चला गया, या 49.7 चला गया. तो कई बार मार्केट से कंप्लेंट आता है कि आपने 200 ग्राम कम दिया है. सो एक ब्रांड इमेज है, एक इंसल्ट है, और एक एथिक्स के ऊपर भी बात आती है. दे आर चार्जिंग फॉर 50 kg एंड गिविंग 200 or 300 grams less feed. So what we can have, we can place one continuous wear machine after the auto bagging. नहीं तो हर फिफ्थ बैग रैंडमली मैनुअली चेक करना पड़ता है कि ऑटो बैगिंग सही चल रही है. वो आदमी का खर्चा, वो मैनुअल ओरिएंटेड काम, वो कई बार स्किप हो जाता है. उसको कंट्रोल करने के लिए वी कैन ऐड वन कॉन्टिन्यूस वेयर मशीन एट द बैगिंग मशीन. इस कन्वेयर से बैग चलता हुआ पास करेगा इस प्लेटफॉर्म से. If the desired weight is not within the tolerance of the set weight, this automatically stops the conveyor, and this platform is having pneumatic cylinders. Cylinders will open, and this conveyor will tilt up, and वो बैग को साइड कर देंगे, that we can check the bag. So this is very important thing in the auto bagging, that we can add in our existing machines, feed mill also. So this is a complete idea of a feed mill process. Then the next process is the feed mill layout. This is a general layout of a feed mill. For an ideal, for let's say 10 ton per hour feed mill, for a 10 ton per hour feed mill, the if someone wants to produce 150 or 180 metric ton per day, and he wants to store raw material of minimum 2 months inventory. Let's say 180 metric ton per day into, we assuming 26 running days a month, into 26 into 180 into 26, and he wants to store the inventory of 1.5 months into 1.5, that is around 7,000 metric ton. So 180 into 26 into 1.5. So he needs to store 7,000 metric ton in his warehouse. So what will be the ideal size required to store this 7,000 metric ton of raw material? And generally feed millers store finished goods of 5 to 7 days maximum. Around 500 to 700 metric ton of finished goods. And also feed mill warehouse, we need three things. One is the storage space for the raw material, storage space for the finished goods, and the feed mill.
These three things, and other are the pre-mixed medicines, that are the separate things that we need in same warehouse, or some else where we can have that warehouse. But for 3D discussion, he needs 7,000 metric ton of the raw material. So if we check the theoretical calculation of the warehouse on the internet or in the other books, there is a specific space required for the ventilation, the passages, and all other things, and there is stacking limit that up to 15 or 18 feet we can go. We have a thumb rule. We discuss with 8 to 10 feet millers. We noted down their warehouse size, and we asked them that when they put complete material in the warehouse with 100% filling up to that stacking height in seasons, what will be the storage of the grains they are getting. So with those collective data and the theoretical, we have a one thumb rule that we multiply the amount of the raw material into 6. For example, 7,000 into 6, it is around 42,000 metric ton. So we requires 42,000 square feet of warehouse to store a 7,000 ton of raw material. Raw material calculation is based on 18 feet stacking height and on single product density, because the density of the maize is different. The density of the DORB, rice bran, and soya DOC is different. So we are discussing on 18 feet stacking height and maize density. If you want to store 7,000 metric ton of the raw material grains and 500 to 700 ton of the finished goods. Finished goods stacking heights will not go up to the 18 feet. Generally, finished goods due to the dust formation, the PDI and the bag and ease in handling. Generally, feed millers do the stacking at 10 or 12 feet maximum. And raw material we can have as per the labor and as per the area. In some areas, labor do the stacking up to 18 feet. Some areas they do go only at 15 feet. Even in Haryana, with the help of the stackers, feed millers are utilizing the stacking height up to 30 feet. With the help of the stackers, they are stacking the material at 30 feet too, and getting the maximum efficiency from their warehouse storage. So generally, we multiply the raw material requirement by into 6 factor. That will be the square feet of the total square feet of the warehouse. But now we have to calculate the width and the length. We got the complete 42,000 square feet of the warehouse, but what will be the length and the width? In general practice, with respect to the prefab cost and the cost of the warehouse, 80, 90 and 100 is the ideal width of the warehouse with respect to the cost and the installation. After 100 feet, we have to put the extra supports in the truss of the feed mills warehouse, and to also we can have to add a center column for the supports. So looking the cost of the prefab warehouse, 80, 90 and 100 is the ideal width of a warehouse. So if we assuming 100 feet width, so 42,000 divided by 100 is 420. So for 7,000 metric ton of grain and a 10 ton feed mill and 500 and to 700 metric ton of the finished goods, we requires 100 by 450. 100 in width and 450 in length. That warehouse we requires for to store that much of material. Same in small warehouses or in with respect, in relation with this, we can multiply by 7, because the
as the जैसे जैसे वेयर हाउस का साइज छोटा होता रहता है, the area required for the passage, ventilation and the movement वो उतना ही रहता है, उतना एफिशिएंसी कम हो जाता है। जितना छोटा वेयर हाउस होगा, स्टैकिंग एफिशिएंसी उतना कम हो जाता है। तो जितना छोटा वेयर हाउस में जो फैक्टर हमने 6 लिया, उसको समटाइम्स 7, 7.5 और 8 भी लेना पड़ता है। सो दैट इज द आइडियल। अगर आपको 3000 या 4000 मेट्रिक टन ग्रेन स्टोर करना है, तो आपका वेयर हाउस विल बी अराउंड 22 to 25,000 square feet, and 25,000 divided by 90, so आपका वेयर हाउस होगा 90 by 280. So this is the standard warehouse calculation. We can select as per the area, as per the space available, as per the inventory we required for the raw materials. The size of the feed mill depends upon the feed mill supplier. Few feed mills hammer, as in our feed mill, hammer mill is on the ground floor, so our height is less than the compared to the other feed mills, and the width and the height and the length of the feed mills totally depends upon the feed mill supplier. Then one thing more, location of the plant. For example, we are assuming this layout, and in future we have chances that we can procure that land too. फ्यूचर में हमारे पास चांस है भी, ये जो फीड मिल का पीछे वाला लैंड है, ये हम प्रोक्योर कर सकते हैं। सो इन दैट केस वी प्रीफर टू पुट फीड मिल इन फ्रंट, बिकॉज ऑलवेज रॉ मटेरियल की तरफ का एरिया एक्सपेंड होता है और चेन एक्सपेंशन में इजी होता है। अगर यहाँ पर हमें फ्यूचर में लैंड मिल सकता है और हम फीड मिल पीछे रख देंगे, देन इधर से रॉ मटेरियल इधर फिनिश गुड होगा, तो ये हमारा एक ब्रेक आ जाएगा बिटवीन रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। हमको एक मूवमेंट चाहिए कि रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आपस में डिस्टरबेंस ना हो, हमारा एक स्मूथ मूवमेंट फॉलो हो। सो हम जिस तरफ हमारा शेड एक्सपेंशन का प्लान रहता है इन फ्यूचर, हम फीड मिल उससे ऑपोजिट सजेस्ट करते हैं। बाकी एज पर वास्तु एंड अदर कंस्ट्रेंट्स वी हैव अ डिस्कशन, लेकिन इन जनरल प्रोसेस प्रैक्टिसेस जहां पर हम फ्यूचर में शेड को एक्सपेंड कर सकते हैं, फीड मिल उससे ऑपोजिट साइड हम रखते हैं। अगर हम इधर एक्सपेंड करते हैं तो ये फीड मिल फ्रंट में रहेगा, अगर फ्रंट में एक्सपेंशन का चांसेस है तो फीड मिल हम पीछे रखेंगे। एंड ऑलवेज वी पुट इन चेन कन्वेयर इन इंक्लाइंड फॉर्मेट, सो दैट in coming future we can have good connectivity with the other chains by overlapping the one chain with the other. So that is the key checkpoints required in the feed mill design. This is a general document for a feed mill design and layout that we can share with each and everyone. Also available in blog and article in our website. That things to be kept in mind by feed mill design, like weighbridge, the location of the weighbridge, गाड़ी का टर्निंग मूवमेंट उसको मिले और security gate के नजदीक हो, so that we can have the monitoring of the way. Even way bridge weight can be directly linked to the PLC and the inventory management module. जैसे आपका मक्का का गाड़ी आया, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपने मेज लिखा हुआ है 4000 मेट्रिक टन, वो जैसे ही वे ब्रिज मक्का का गाड़ी सेंस करेगा और वे लेगा, ऑटोमेटिकली दैट कैन बी डिटेक्टेड टू आपका वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल में एडिशन चला जाएगा और डेली की कंजप्शन माइनस हो सकती है। सो वे ब्रिज हो गया। बॉयलर का चिमनी हाइट का नॉर्म्स एज पर द बॉयलर एंड द गवर्नमेंट नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल इन हरियाणा नॉर्म्स हैं 27 या 30 मीटर तक चिमनी होना चाहिए। For before installing feed mill, you have to check with your local norms and the government regulations, what will be the requirement of the government with respect to the chimney norms, the dust emissions. For example, in nearby NCR region in India, government yes sir. Mr. Harjot Singh, I think Yes, sir. the share is not shared to the participants. Oh, check the it screen, yes. Screen is not shared. Okay, yes. I will share the screen, sir. Okay.
Your Word document is being shared from the last presentation of general layout of the feed mill. So One sorry second. to interrupt. Oh, okay, sir. Thank you, sir. I will start here, sir. Thank you, sir. ये लेआउट देखा सर हमने? Yes. अभी आ रहा है. Yes. Yes. ओके, तो इस लेआउट पर नहीं डिस्कशन हुआ हमारा. एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लेआउट, सॉरी. जैसे ये लेआउट है सर, इसमें मैं ये डिस्कस कर रहा था, जैसे हमारे पास इन फ्यूचर ओपन स्पेस में गोडाउन एक्सपेंशन का प्रोविजन है. We generally practice feed mill opposite to the expansion part because only the raw material area, finished goods area हमेशा फिक्स रहता है, and 5 to 7 days का ही feed mills रखते हैं, तो वो एक फिक्स पैटर्न है. Always they focus on the raw material procurement timely. मैक्सिमम रॉ मटेरियल का एरिया बढ़ता है. सो जिस एरिया में हमारे पास फ्यूचर एक्सपेंशन का प्रोविजन होता है, हम फीड मिल उसके ऑपोजिट सजेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी चेन कन्वेयर को हम बढ़ा सकें. So that's we keep in mind while doing a layout of a feed mill, and this is layout of a warehouse design. For example, the width is 100 feet and the length is around 296. So we multiply 100 by 296, that is around 29,600 square feet of the warehouse. हम simply इसको 6 से divide कर देंगे, divide by 6, that comes around 4,900. So सेफ्टी लेते हुए हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको. 29,600 divided by 7, that will be around 4,200. So इस warehouse में 100 by 296 of around 30,000 square feet, we can store 4,000 metric ton of raw material at 18 feet stacking height and maize density. तो ऐसे कैलकुलेशन से हम अपना वेयर हाउस का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं. विड्थ वेयर हाउस का फिक्स हो जाता है, जो आप इनिशियली आपने 80, 90, 100 एज पर द कॉस्ट एक आइडियल विड्थ है. 100 फीट से ज्यादा विड्थ होने पर हमारा ट्रस का कॉस्ट और सपोर्ट स्टील का कॉस्ट बढ़ जाता है. तो जनरली विड्थ लिमिट रखते हैं फीड मिलर्स 80, 90 एंड 100, और लेंथ पर कितना फोकस करके हम उसको बढ़ा सकते हैं. और लेंथ कभी भी बढ़ सकती है इन फ्यूचर. विड्थ जो आपने इनिशियली सिलेक्ट कर लिया वो फिक्स रहेगा. सो ऐसे हम अपना वेयर हाउस का एक वी कैन सिलेक्ट अवर वेयर हाउस विद रिस्पेक्ट टू द फीड मिल कैपेसिटी एंड द डिजाइन. देन this is a new document for the feed mill design and layout. That same document we had in our website in article and blogs. From this we can have a complete idea that what will be the ideal location and the size of the warehouse, what will be the height required for the boiler chimney as per the norms. Then one thing more, rodent proof constructions. जैसे मोस्टली जो हमारा फीड मिल है वो प्लिंथ लेवल से 2.5 फीट, बिकॉज ट्रक का जो फ्लोर लेवल है वो उसको मैच कर सके और लोडिंग अनलोडिंग इजी हो. प्लिंथ लेवल से 2-2.5 फीट ऊपर उठ के बनता है. और जहां जहां पर भी हमारा गेट्स आते हैं फीड मिल के, वहां पर एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म्स बना देते हैं, बिकॉज रोडेंट्स जो हमारे हैं वो कभी भी उल्टा स्क्रॉल नहीं कर सकते. सो टू मेक द रोडेंट प्रूफ कंस्ट्रक्शन, a 2 feet extended platform above the plinth level should be there. We can avoid the rodents coming from the outside area. Then electric transformer and the main line with respect to the cost
द ट्रांसफार्मर हाउस, उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करते हैं भी आपका ट्रांसफार्मर का पॉइंट कहाँ होना चाहिए। Hello. यस सर। Pari, can you again explain that height about that for the rodent control? Okay, 1 second sir, I will open one layout में I will explain sir. Any detail, if anybody can share? Yes, how sir, much, I have. How much exactly? I mean, some idea. What is the feed eaten by a rodent? Like, you know, I don't know about. Of course, it depends on the number of rodent and all. But generally, what is some figure about the damages by rodent? Yes sir. Some data. I just want to know. I am sir, actually I am opening one presentation. 1 second. In our integration, if any farm grade is F grade, we call them rodent grade. Yes sir. Because the feed eaten by the rodent or there is a theft by the farmer, it is one and the same. So any F grade farmer, we call them rodent farm. सर एक्चुअली एग्जैक्टली जो भी फीड मिलर्स हैं व्हाट दे डू जनरली, जो फीड मिल से प्रोसेस लॉस है और लॉस ड्यू टू द rodents and the pest, they calculate 0.5% in their calculation. वो इधर 0 हो या 0.7 हो. फॉर एग्जाम्पल जो ये 7th टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था, प्रोसेस लॉस, रॉ मटेरियल श्रिंकेज और मॉइस्चर लॉस इन फीड मिल्स. तो ये डिस्कशन हमने नेक्स्ट पॉइंट में करना था, इसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ओनली आउट पॉइंट है फीड मिल का वो है ब्लोअर, जो हॉट एयर कूलर से सक करके एटमॉस्फेयर में फेंकता है. एंड वी मस्ट इंश्योर वो सिर्फ हॉट एयर जानी चाहिए, उसके साथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए. तो जो फीड पैलेट के साथ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो वहां से आउट चले जाते हैं. तो जो एक फीड मिलर्स हैं वो अपनी थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेशन में 1.5% श्रिंकेज, जिसको मॉइस्चर श्रिंकेज हम कहते हैं, जो हम इस डॉक्यूमेंट में कवर करेंगे, और 0.5% ड्यू टू द डस्ट एमिशंस एंड द पेस्ट. तो वो 1.5 प्लस 0.5 2% की कैलकुलेशन अपनी कॉस्टिंग में लेकर चलते हैं, चाहे वो 1% तक रिड्यूस कर रहे हो, चाहे 1.25 कर रहे हो, चाहे कभी कभी वो 0 हो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन में वो 2% जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फीड है या अपना जो कमर्शियली बेच रहे हैं उसमें 2% की श्रिंकेज कैलकुलेशन वो लेकर चलते हैं. एक्चुअल कैलकुलेशन भी सिर्फ रोडेंट्स ने कितना खाया वो प्रैक्टिकली जजमेंटल बहुत मुश्किल है. उसको कुछ लोडिंग अनलोडिंग के दौरान स्पिल हो गया और कुछ पड़ा जो नीचे का बैग लेयर है, फीफो प्रोसेस हमने नहीं फॉलो किया. टैगिंग जनरली फीड मिल्स में लोग टैगिंग कर देते हैं, अभी ये पुराना मटेरियल है, टैगिंग इसको पहले बैग को कंज्यूम करना है, नीचे वाला बाद में करना है. लेकिन वो इन जनरल प्रैक्टिस 0.5% कैलकुलेशन लेकर चलते हैं अपनी कॉस्ट. ये है सर. That's okay. That's okay. No, and one before thing this, more, like yes. what you were mentioning about, keep that in a slanting mode for that, because rodent cannot go back. Yes. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. One second.
सर ये वीडियो दिख रहा है सर? Yes, Yes, sir. yes. इसमें सर जहां पर भी ये इन पॉइंट है ना, जी ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट, जी उसको जैसे ये हमारा साइड व्यू है इन पॉइंट का, ये आ गया हमारा, यहां पर आपका गाड़ी लग गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये वो 2-2.5 फीट प्लिंथ लेवल है जहां पर थोड़ा ऊपर उठ के गोडाउन वेयर हाउस बनता है, ताकि जो Yes. हमारा जो ये जो गाड़ी है इसका मटेरियल इजीली अनलोड हो जाए। और जो ये एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा 2.5 फीट आगे जाकर बनता है, क्योंकि जो हमारा रोडेंट्स है वो उल्टा नहीं चल सकते, बिल्कुल ये इसके साथ नहीं होता, इनको जैसे एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म या छज्जा बोलते हैं वो बनाया Yes, होता है, yes, yes. I got your point. ताकि I got your हाँ रोडेंट्स उल्टे नहीं क्रॉल कर सकते। गाड़ी से कोई रोडेंट आएगा वो अलग बात है, लेकिन फ्लोर से रोडेंट नहीं जा पाएगा। Okay, 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 okay. ऐसा फीड मिल्स का जो इन पॉइंट्स होते हैं वहां पर ये एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म मैंडेटरी है Okay, okay, okay. फॉर अ रोडेंट प्रूफ कंस्ट्रक्शन। यस सर, Thank you, thank you. यस सर। देन जैसा हमारा डिस्कशन हुआ भी, आपको अपना यू हैव टू कैलकुलेट गोडाउन साइज, वेयर हाउस, आपको इतना महीने का रॉ मटेरियल रखना है, कितने बाय कितने का वेयर हाउस आप बनाएंगे, उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं विद दैट फैक्टर जो हमने डिस्कस किया। सेम प्रोविजन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से हमको जहां पर ओपन स्पेस मिल रहा है, वी कीप द फीड मिल ऑपोजिट टू दैट एरिया सो दैट देयर इज ease in expansion of the intake chain conveyor in future. Then all other the availability of water, electricity, labor, बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट यूनियन नहीं है। You can have a very good logistic codes like in Punjab there is a area Rajpura and Khanna, Rajpura especially, वहां पर रिटर्न का गाड़ी इवन फ्रॉम राजपुरा वी कैन कन्वे द फीड अप टू द जयपुर, उत्तराखंड, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, गुजरात, वहां से इतनी कनेक्टिविटी है। सो विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स, द लॉजिस्टिक कॉस्ट, we can select the area location of the feed mill. Then this is a complete document for a feed mill design and layout. Then the next is the importance of process parameters in feed mills. Like we compare the feed mills. This machinery is good, this German technology is good, or this supplier is not good. We generally rate with the brand names. What we can do, we can rate the machine quality with respect to the process parameters. Like in automation, what type of screw feeders and gravity feeders we are using. ऑटो बैचिंग में एक नया मॉड्यूल है ऑटो कंपनसेशन मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल हमको 700 केजी मक्का डोज करना है बिन में विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेविटी और स्क्रू फीडर। 700 की जगह ड्यू टू मटेरियल साइज भी चेंज होता है, मॉइस्चर बिहेवियर सब चेंज होता है। फॉर एग्जांपल पिछला बैच 700 की जगह 697 केजी डोज हुआ। अगला बैच में ऑटोमेशन प्रीवियस रीडिंग सेंस करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अपना फीडर भी, जो मैंने पिछली 2-3 रीडिंग्स में एवरेज मेरा आया, मैं इतना पीछे रह रहा हूं, मुझे अगली रीडिंग में इतना एक्सेस डोज करना है ताकि मैं रीडिंग पूरी कर पाऊं। भी मैं
अगर 3 kg शॉर्ट कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट रीडिंग में उसको 3 kg का जो मार्जिन कवर करके मुझे कितना फीडर और चलाना पड़ेगा, वो पीएलसी ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन सेल्फ कंपनसेशन। और जो आपका बैचिंग है वो कितनी एक्यूरेसी से चल रहा है। बैचिंग डोज करते समय हम ये जरूर ध्यान रखें हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्स का क्या है, बिकॉज जितना इनिशियली हमारा मॉइस्चर आई कंटेंट थिंक डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा। यस, हम कितना उसको बैचिंग में, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का मॉइस्चर हमारा पहले ही 15 या 16% आ गया। इन सीजन जो मेज है वो हमें 14-15% का भी मिलता है। इनिशियली ही 14-15% का आ गया। हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है इन कंडीशनिंग वी हैव टू ऐड 2 to 3% ऑफ मॉइस्चर, 2.5% मिनिमम स्टीम और कंडीशनिंग के थ्रू ऐड होना चाहिए। वो हमारा प्रोसेस का पार्ट है। अगर पहले से ही मॉइस्चर आपका ज्यादा है उतना ही कम मॉइस्चर हमको देना पड़ता है कंडीशनिंग में, बिकॉज अगर उससे ज्यादा हम मॉइस्चर कंडीशनिंग में दे देते हैं फीड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था मॉइस्चर, देन हमें मैकेनिकल इश्यूज आते हैं लाइक डाई स्लीपेज, डाई स्कीडिंग, डाई चोक हो रहा है। तो अगर पहले ही हमारा मॉइस्चर, कई बार क्या होता है इन परचेज या इन जनरल फीड मिल्स 15% का मॉइस्चर आ गया, जनरली दे डू द डिडक्शन एज पर द मॉइस्चर। भी हमारा प्राइस तय हुआ था 13% का, लेकिन 15% आया तो 2% का पैसा कटेगा। लेकिन वो 2% का तो हमने काट लिया, लेकिन हमारा प्रोसेस कितना सफर हुआ उसके कारण, वो एक बहुत बड़ा इशू है। हमको कंडीशनिंग में 2.5 kg 3 kg 2.5 से 3% मॉइस्चर ऐड करना है फॉर गुड कंडीशनिंग, मॉइस्चर एडिशन, जेल्टनाइजेशन और गुड पैलेटिंग प्रोसेस। अगर पीछे से ही मॉइस्चर ज्यादा है तो हम कंडीशनिंग में उतना अच्छा मॉइस्चर नहीं ऐड कर पाते। दैट्स व्हाई हम मस्ट देख सकते हैं। बिल्कुल इसको मैनेज करना तो इजी नहीं है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज भी है, वही वेंडर हैं, वही सप्लायर्स हैं, लेकिन कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं थोड़ा सा हम उसको चेक कर सकते हैं। देन इन ग्राइंडिंग में हम फोकस करते हैं 3 mm का स्क्रीन होना चाहिए। द स्क्रीन शुड बी 2.8, 2.5 या 3.2। स्क्रीन साइज टोटली डिपेंड्स अपॉन द ग्राइंडर साइज। अगर स्क्रीन एक 3 mm होल का स्क्रीन विद 3 mm थिकनेस, अगर उसका थिकनेस 3 mm है मोटा और होल भी 3 mm है, वो एक 2.8 mm का स्क्रीन जो सिर्फ 2.5 थिकनेस का मोटा है उससे फाइन ग्राइंडिंग दे सकता है। ऐसा नहीं है अभी हमको 2.8 या 2.5, आपको होल साइज भी देखना है और थिकनेस भी देखना है, बिकॉज जितना थिकनेस कम होगा स्क्रीन का उतना ही हमारा ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, उसको पार्टिकल को निकलने में उतना ईज हो जाता है होल में से। तो हमको सिर्फ चेक करना है पार्टिकल टेक्सचर, हमको नहीं चेक करना भी हम थिकनेस और होल साइज क्या यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका टेक्सचर चेक करें कि क्या मोर देन 80% वी आर गेटिंग 800 to 900 माइक्रोन्स। हमको एक सिंपल टेस्ट है, 4 सीव लेकर हमको स्क्रीनिंग करके उसका एवरेज पार्टिकल साइज निकालना है। हम वी फोकस ऑन द एवरेज पार्टिकल साइज, ना कि हम टिप स्पीड, हैमर मिल आरपीएम और मशीन डिजाइन और स्क्रीन सिलेक्शन। हम सबसे पहले रिजल्ट चेक करें, देन अकॉर्डिंगली वी कैन एडजस्ट द स्क्रीन साइज, द आरपीएम और सब चीज। तो ये सीव टेस्ट हैमर मिल में हम परफॉर्म कर सकते हैं to check the grinding texture. Then like generally we use 3 or 2.8 mm screen depending upon formulation, tip speed of hammer mill, rpm, screen thickness. So average particle size is around 400 to 900 microns. तो हम उसको स्क्रीन अपना सीव एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ग्राइंडर का सेटिंग वी कैन चेंज।
देन इन मिक्सिंग प्रोसेस, yesterday हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग सीवी प्रोसेस। हम सीवी चेक करें एट डिफरेंट टाइम विद ड्राई एंड वेट मिक्सिंग। हम 4-5 सब ऑप्शंस के साथ अपना सीवी चेक करें। ड्राई मिक्सिंग में इतना है, 4 मिनट बाद इतना है, ऑयल एडिशन के बाद इतना है, 6 मिनट के बाद इतना है, अलग अलग रेसिपीज पे इतना है। तो आप एक जजमेंट पर जा सकते हैं। आपके पास सब एडजस्टमेंट्स होती हैं टू कंट्रोल द डिस्चार्ज गेट, टू कंट्रोल द चार्जिंग गेट, कितना टाइम उसको चार्जिंग के लिए देना है, कितना टाइम मिक्सर में रखना है। वी हैव ऑल द एडजस्टमेंट इन द ऑटोमेशन एंड द फीड में एज पर द सीवी। हम उन एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। देन कंडीशनिंग, जैसे पहले हमारा बात हुआ 2 से 2.5% जनरली प्रैक्टिस किया है फीड मिल्स में। अगर हमारे 3 कंडीशनर हैं 1, 2 एंड 3, जो पैलेट मिल ऑपरेटर है वो टॉप कंडीशनर में 100% स्टीम देता है, सेकंड में 50% देता है, थर्ड को बंद रखता है। एंड ही जनरली सेज अगर मैं थर्ड में स्टीम दूं तो मेरा डाई स्लिपेज का प्रॉब्लम आता है। प्रैक्टिकली वो अपनी जगह सही है, उसको पैलेट में चलाना है, लेकिन न्यूट्रिशन और टेक्निकली या थ्योरेटिकल हम सोचे हमको तीनों कंडीशनर में टेम्परेचर और स्टीम चाहिए। सो टू अवॉइड दैट स्लिपेज वी कैन हैव अ गुड रिटेंशनर और VFD एट रिटेंशनर, सो दैट फीड को समय मिल सके जितना 2 कंडीशनर्स में स्टीम और मॉइस्चर ऐड हुआ है वो एब्जॉर्ब कर पाए before going to the pelleting chamber. So for that we can have a long term retention with the help of VFD of hygienizer, जिससे हम उसको steam absorption का time मिल सके। Then cooling में सबसे बड़ा हमारा एक चैलेंज है, that is shrinkage. Cooling is a evaporative process. हमको हीट के साथ मॉइस्चर भी चाहिए ताकि वो कूल हो सके। मिनिमम 2 से 2.5% मॉइस्चर उड़ना चाहिए कूलिंग प्रोसेस में, तो जाके हम टेम्परेचर अचीव कर पाएंगे। इन सम केसेस इन ड्राई फॉर्मुलेशन, लाइक कभी कभी हमारे पास 14-15% का भी ग्रेन आता है, कभी कभी हमारे पास 9-10% का भी ग्रेन आता है। फॉर एग्जाम्पल इन बैचिंग हमारा एवरेज बैच का मॉइस्चर आ गया 9.5%। देन ग्राइंडिंग में हमारा ड्यू टू द ग्राइंडिंग एंड हीट जनरेशन लगभग 0.3 से 0.5% मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू हीट, और क्योंकि पार्टिकल टूट गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ग्राइंडिंग में थोड़ा सा मॉइस्चर परसेंटेज डाउन आता है। देन मान लीजिए 10 था पहले, ग्राइंडिंग में 9.5 रह गया। देन मिक्सिंग में कुछ लिक्विड ऑयल या कुछ लिक्विड मेडिसिन्स डलने के कारण 0.5 या 0.7% या 1% बढ़ जाता है। वो 10.5 से हो गया आपका 11.25 से 11.25 हो गया। किसी कारण से हम कंडीशनिंग में ऐड नहीं कर पाए, आपका कंडीशनर सिर्फ 1% ऐड कर रहा है, 11.25 से आप 12.25 पर पहुंच गए। 9.5 सबसे पहले था आपका 10%, फिर आया ग्राइंडिंग में 9.5, मिक्सिंग में हो गया 10.25 और 1% कंडीशनिंग में ऐड होकर 11.25 हम पहुंच गए। तो 11.25% में अब हमको फिनिश फीड का मॉइस्चर चाहिए एज पर सीजन। फॉर एग्जांपल 11%, 11.25, 11.5 रेंज मॉनसून सीजन वेदर के हिसाब से फीड मिलर्स, और शेल्फ लाइफ कुछ सेफ्टी भी हमारा 0.2-0.3% श्रिंकेज हो जाए, हमको वो लॉस मंजूर है, लेकिन फंगस और टॉक्सिसिटी या मोल्ड वो हमको रिस्क नहीं लेना, हमको इतना कम ही रखना है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फीड मिलर एंड द सीजन। से अब आपको फिनिश का मॉइस्चर चाहिए 11.5, आपके पास इन जो हो रहा है वो है 12.25, आपको आउट चाहिए 11.5, तो 12.25 माइनस 11.5, आपके पास मार्जिन रह गया सिर्फ 0.7% का। जब आप अब कूलर में जब इन जा रहा है, टेम्परेचर है अराउंड आपका 85 डिग्री के आसपास,
जैसे 80 डिग्री हुआ, पैलेटिंग में 5-7 डिग्री और बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जब कूलर में मटेरियल इन हो रहा है वो है 85 डिग्री, चाहिए आपको 35 डिग्री अराउंड रूम टेम्परेचर, तो 85 से 35 आपको लेकर आना है, लेकिन आपके पास सिर्फ मॉइस्चर का रेंज है 0.75%, तो जो आपके पास ये 50 डिग्री आपको डाउन लेकर आना है, या तो आप इसको 40-45 डिग्री पर वो रुक जाएगा अगर आपको 11.5% मॉइस्चर मेंटेन करना है। अगर आप उसको 35 पर लेके आएंगे तो ये ओवरकूल हो जाएगा, आपका जो मॉइस्चर है वो 11.5 से कम होकर 10.5 या 11.25 पहुंच जाएगा। सो हमको 2-2.5% मॉइस्चर रेंज चाहिए कूलर में टू गेट ऑप्टिमम कूलिंग एंड टू रिड्यूस द मॉइस्चर श्रिंकेज। अगर आप 1% की कैलकुलेशन एक सीजन में लगा लें तो ये लाखों करोड़ों की वैल्यू बन जाएगी श्रिंकेज के ऊपर। आप 50 किलो कंसंट्रेट, फॉर एग्जांपल आप 50 किलो का आपका बैग है जिसमें आप 11.5% मॉइस्चर के पैसे ले रहे हैं, 50 केजी इंटू 11.5%, यानी कि उसमें 50 किलो में आपका 5.75 केजी वाटर है, बाकी कंसंट्रेट मास है। जब आपकी ये मॉइस्चर डाउन होकर 10.5 हो गया, आप उतने ही पैसे में पानी कम करके कंसंट्रेट मास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट इज योर डायरेक्ट लॉस। तो उसको उसको चेक करने के लिए फिनिश फीड का मॉइस्चर और कंडीशनिंग में मॉइस्चर बिफोर कूलर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमको मेंटेन करना। देन डाई सिलेक्शन है एज पर द पीडीआई, वो हम जो डाई का हमारा पार्ट आएगा उसमें उसको कवर कर सकते हैं। देन क्रम्बलिंग प्रोसेस, जो जैसे स्क्रीनर्स हैं, जो क्रम्बलिंग हमारी होती है, जो क्रम्बलर्स हैं हमारे 2 रोल्स हैं, उसमें एक रोल क्रम्बलिंग इज नॉट अ प्रेसिंग प्रोसेस, वो शेयरिंग प्रोसेस है। हमारे जो 2 रोल पैलेट मिल के बाद क्रम्बलिंग कर रहे हैं, एक रोल दूसरे रोल से 1.3 से 1.5 टाइम्स फास्ट घूमता है, एक रोल तेज घूमता है, एक रोल स्लो घूमता है, ताकि हमें कटिंग के साथ हमें प्रेसिंग एक्शन ना मिले, हमें कटिंग एक्शन मिले। तो कटिंग एक्शन में हमारा डस्ट फॉर्मेशन और पीडीआई की क्वालिटी बहुत बढ़ता है। फिर हमको उसके रोल्स का यूनिफॉर्म कितना वो, उसमें हेलिक एंगल रहते हैं रोल्स में, वो ग्रूव्स हमारे वर्न आउट होते रहते हैं, हमको वो ग्रूव्स चेक करना रहता है भी आपका वो जो क्रम्बलर रोल का टीथ और प्रोफाइल है वो कितना एक्यूरेट है, डस्ट तो नहीं ज्यादा बना रहे। जितनी वो डस्ट ज्यादा बनाएंगे उतनी रिसाइकलिंग, उतनी आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, उतनी फीड क्वालिटी, रेसिपी चेंज, जब रिसाइकलिंग हो गया 20%, वो नेक्स्ट रेसिपी, वो सब चीजों को चेक करने के लिए हमको क्रम्बलिंग में आपका रिसाइकलिंग कितना हो रहा है फीड में, वो हमको एक जरूर चेक पॉइंट है। रेंडमली हमें 5 दिन में 5 बार अलग अलग रेसिपीज पे जो साइक्लोन और स्क्रीनर से फीड रिटर्न आ रहा है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इतने किलो रिसाइकलिंग आ रहा है, इतने किलो इनपुट पर, फिर हम रिसाइकलिंग की परसेंटेज निकालते हैं। तो वो एक रैंडम चेक हो हमारी फीड मिल्स के ऊपर, जिसमें हम इस चीज को देख सकते हैं। देन स्क्रीनर्स हैं, जनरली फिनिशर और प्री स्टार्टर में स्क्रीनर्स, वाइब्रो स्क्रीन्स का मैश अलग अलग होता है। कई बार हम उसको फ्रीक्वेंट रेसिपी चेंज में ऑपरेटर मिस कर देता है भी टाइम कंज्यूमिंग है, एक 1 आवर इट मोस्टली कंज्यूम्स टू चेंज द स्क्रीन ऑफ द वाइब्रो सीव, उसको 18 मैश से चेंज करके 22 मैश करना है। तो वो जनरली प्री स्टार्टर में भी 18 मैश या 16 मैश स्क्रीन से स्क्रीनिंग करते रहते हैं, जिससे आपका इवन 40-30% तक रिसाइकलिंग हो जाता है। So that is a big check point, हम उसको as per the recipe, as per the process and requirement, हम अपना स्क्रीन उसको यूज कर सकते हैं। Then next main
role of preventive maintenance, that file I can share with all the participants. इसमें सब चीज है भी, when to change the hammer mill beaters, screen, the scraper settings of the die, the chain tight, the elevator belt checking, tightening of the belts, and the intake chain conveyor, all things that we can have, we can check in our feed mill. The next important thing is the die selection with respect to the layer and broiler feed. The most important thing, the die is most expensive spare part of a pellet mill, and getting optimum life from a die in general practice increases the benefit or reduces the processing cost. So 50 to 60% of feed millers use common die for broiler, breeder, and layer. So broiler is soft formulation having good oil content. Layer is hard in formulation having limestone powder, DCP, LSP, and more fiber. So हमने ऑडिट किया फीड मिल में, एक डाई पर दोनों लेयर एंड ब्रॉयलर यूज किया हमने, और एक दूसरी फीड मिल में वो यूज सेपरेट डाई फॉर द ब्रॉयलर और सेपरेट डाई फॉर द लेयर. हमको दो डाई का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल लाइफ में हमको 40% का बेनिफिट मिला जब हमने लेयर और ब्रॉयलर के लिए अलग अलग डाई यूज किया. बिकॉज लेयर में 3.5 से कम होल साइज का डाई, 3 और 2.8 mm जैसे. Please share the screen, sir. Okay. Maybe you are talking on picture or diagram. Yes, sir. Fine. This is the sir nomenclature of a die, a general diagram. This is the inside view of a die from where the material enters into the hole. This is effective working length, which actually act over the pelleting process. Then this is the outside relief that we do provide in the dies with respect to the recipe and the formulation. For example, in broiler feed, the general L by D, length by diameter ratio, is around 1:12, 13, 14 and above. 1:12 or 13 means, for example, if the hole size is of 3 mm and we are using 1:12 mm, 1:12 die, so 12 into 3, 36 mm will be the effective length. And if the total thickness of the die is 50 mm, so 50 minus 36, the 14 mm will be the relief. Like if someone says my PDI is not good, I have to increase the PDI, and my formulation have a good and rich in oil content. I need a more configuration die with higher L by D, like 1:13 or 1:14. 1:14 means 14 into 3 is 42. This effective area will be of 42 mm and the relief will reduce to 8 mm. If someone asks, I need 1:15 mm die, 1:15 ratio die with more hardness, then 15 into 3 is 45. 45 will be the effective working length of 3 mm. Rest relief is of 3.3. Relief dia is 0.3 mm more than the effective dia. So that is the different die nomenclature we uses in the broiler feed. And in layer feed, that minimum hole size optimum is 3.5. Below 3.5 mm, there is poor die life, more power consumption, more heat generation, and more wear and tear in die. So minimum is 3.5 mm hole size, and the ratio is 1:9, 1:10, or 1:8.5. 1:9 means 9 into 3.5. 9 into 3.5 is around 31.5. This effective length will be of 3.5 mm hole of 31 mm.
The rest will be the relief. So we have a complete document we can share with all the participants that how we can select a different dye for a broiler and the layer feed, and how we can enhance the efficiency of the dye, and we can get a good balance of the PDI and the output by using a appropriate dye with respect to the oil and the fiber content. So this is a document like selection of dye as per formulation, dye fitment, avoid using hammers. Dye fit करते समय कई बार operator direct hammer करता है. Instead of direct hammers, we can have a wooden block और एक nylon hammer से हम बीच में wooden block रख के उसको direct impact ना देकर हम fitment कर सकते हैं. Then gap setting between dye and rollers. A very important part, हमको gap कैसे set करना है. dye fit करके रोटेट करके हम चेक करते हैं जब तक डाई और रोल शेल्स के बीच में फीड मटेरियल ना आए, डाई के साथ रोल शेल नहीं घूमना चाहिए. देयर इज 0.5 to 0.7 mm गैप बिटवीन द डाई एंड द रोल शेल, वो हमको मेंटेन करना है. अदरवाइज देयर इज रोल ओवर ऑफ द डाई एंड उसके काउंटर संक जो है वो डैमेज हो सकते हैं. देन हमको डाई को प्रोटेक्ट करना है आयरन पार्टिकल से. देन डाई को फ्लिप करते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल इन व्हीकल हम गाड़ी के टायर आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स हम इंटरचेंज करते हैं फ्रंट एंड बैक. सेम एज इन केस ऑफ डाई, हम डाई को 30% लाइफ के बाद उसको फ्लिप करते हैं बिकॉज जनरली डाई वियर्स फ्रॉम द आउटर सरफेस. जो डाई है वो बाहर से वियर होता है, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए 30-40% डाई लाइफ के बाद डाई को फ्लिप कर देते हैं. सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट कैसे हम डाई से बेटर लाइफ ले सकते हैं. डाई में जो रोल शेल्स यूज करते हैं उनको भी एक लाइफ से ज्यादा यूज करने पर डाई लाइफ डिट्रॉयट होता है. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी हमको एक डाई में 2 या 3 सेट रोल शेल यूज करते हैं तो हमारी डाई लाइफ बढ़ती है. बिकॉज जब रोल शेल पहले ही वर्न आउट हो चुका है, वो डाई को उतनी जल्दी वियरिंग करता है. एक वर्न रोल शेल हमें कटिंग लेंथ, गैप एडजस्टमेंट और डाई में जो ग्रूव्स होते हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस में एक रोल उसका काफी है. तो जैसे जैसे हम उसको रोल शेल को लाइफ लेते हैं, टाइमली रिप्लेस करना हमें उसके लिए बहुत जरूरी है. देन डाई फ्लशिंग. ऐसे साइक्रोम डाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलती हैं, लेकिन जब आपका डे आपने फीड मिल बंद किया, आपको गैप डालना है 6-7 घंटे का नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो जब आप लास्ट रेसिपी के बाद वी हैव टू फ्लश द डाई विद द डीओआरपी से फ्लश करके हमको डाई को प्रिजर्व करते हैं ताकि मॉर्निंग में जो भी उसमें फीड बचा हुआ है वो चॉकिंग ना करे या इजीली निकल आए. तो डाई फ्लशिंग एक बहुत जरूरी है. तो ऐसे ये सब चीजें चेक पॉइंट्स हैं एक डाई लाइफ के लिए. Then the next point is the cost of production. This is ideal एक नवंबर 2022 एक मार्केट प्राइसेस के बेस पर ये डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था. There may be difference in the raw material prices with respect to the time and the availability and the location. In general, the total cost of producing a feed is having raw material cost, processing cost, packing cost and overhead cost.
21 or 22 rupees per kg. Soya Hypro, DCP, limestone powder, mustard DMC, MBM, अलग-अलग items का एक general percentage लेकर that may vary as per the recipe, as per the formulation and location. तो एक जनरल हमने रॉ मटेरियल का एवरेज प्राइस लिया दैट कम्स अराउंड 35 रुपीस पर केजी, दैट मे बी 32, 31 और 36. तो एक रॉ मटेरियल का एवरेज कॉस्ट आ गया. देन व्हाट वी ऐड बॉयलर फ्यूल. वी हैव अ जनरल आइडिया, जैसे 10 टन फीड मिल में अगर 1 टन का बॉयलर रिक्वायरमेंट रहता है तो उसमें कितने केजी वुड कंजप्शन होगा. वुड का ये प्राइस है तो पर टन ये कॉस्ट आ गया. सेम एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सिर्फ फीड मिल का है. जनरली अगर आप कंप्लीट फीड मिल का कॉस्ट लेंगे इंक्लूसिव बॉयलर, ऑफिस और अदर यूटिलिटीज, दैट 25 विल कम्स अराउंड 32 यूनिट्स पर टन. 24 से 25 सिर्फ फीड मिल का रहता है. और अगर आप उसको, और वो भी जब आप एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी पर फीड मिल को रन कर रहे हैं, मोर देन 90% एफिशिएंसी आप फीड मिल से ले रहे हैं, 24 से 25 यूनिट फीड मिल का है. अगर आप उसमें बॉयलर, उसमें ऑफिस, उसमें फीड पंप, मोलासिस पंप, अदर ग्रेन साइलो सबका पावर ऐड कर देंगे तो इट विल कम अराउंड 32 टू 33 यूनिट्स पर टन. तो उसका कॉस्ट आ गया. फिर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फिक्स चार्जेस होंगे. देन that depends upon the location. कहीं पर आपको पूरा प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, that labor will be around 180 rupees per ton और 200 rupees per ton या 220 रुपए पर टन. तो as per the labor cost उसमें हम ऐड कर देते हैं. then ये totally depends upon the feed mill management. कितना स्टाफ है, कितना मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है, कितना ओवरहेड्स है, कितना उनका मेंटेनेंस कॉस्ट है. तो उसके अकॉर्डिंगली ये ओवरहेड और डेप्रिसिएशन ये वेरी करेगा फीड मिल टू फीड मिल. बैंक इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन कितना प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा और किस रेशो में हमने लिया. तो ये सब चीज हम ऐड करेंगे तो डेट कम्स अराउंड 950 to 980 rupees per ton. That will be the total processing cost जो प्रोसेस करने के लिए. रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर इसमें आपका बैगिंग कॉस्ट आ गए. प्रिंटेड एचडीपी बैग, एक बैग का कॉस्ट हो सकता है 25 से 30 रुपए के आसपास है, तो वो 0.5 रुपीज पर केजी आपका ये बैग का कॉस्ट आ गया. तो जब ये सब टोटल करेंगे तो आपका ये एक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पैलेट फीड आ गया. इसमें फिर डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, डीलर क्या है, वो फिर आपका अलग फीड मिल की स्ट्रेटेजीज हैं दैट वेरी अपॉन द फीड मिल टू फीड मिल. सो दैट इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट फॉर पैलेट फीड प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं और जिससे हम अपने फीड मिल का ऑडिट कर सकते हैं. हमारा अगर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो हमको बॉयलर का चेक पॉइंट देखना है. बॉयलर में भी वी कैन आस्क विद द बॉयलर सप्लायर्स फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए, उसका मॉइस्चर कंटेंट, उसका पार्टिकल साइज. बॉयलर में भी वुड का लॉग जो हम यूज करते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर साइज दे सजेस्ट. अगर वुड का लॉग इससे बड़ा है तो वो उतना ही समय लेगा बर्निंग में. अगर वो बहुत छोटा है तो वो ओवर बर्न होगा, हमें टाइम चाहिए बर्निंग के लिए. तो दैट इज द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ वुड लॉग. मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, लिमिट, सेफ्टी लिमिट ड्रम का इतने पर सेट करना है ताकि हमारा बॉयलर रीस्टार्ट में हमको गैप मिले, ओवर फ्यूल बर्निंग ना हो. तो इस डॉक्यूमेंट से आप अपना फीड मिल ऑडिट कर सकते हैं किस पार्ट में आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा जा रहा है और हमें किधर फोकस करना है, इधर इन इलेक्ट्रिसिटी, इन लेबर कॉस्ट, इन बॉयलर कॉस्ट और अदर practices. So we can check our feed mill with this costing. And my last discussion is over the process loss or shrinkage. सबसे बड़ा जो फीड मिल्स में आज चैलेंज है दैट इज द प्रोसेस लॉस, मॉइस्चर श्रिंकेज. दैट मे बी ड्यू टू सर्टेन रीजंस. सबसे पहला तो डिफरेंस इन रॉ मटेरियल इन एंड आउट.
वो उसमें मॉइस्चर का रोल हो सकता है। देन लॉस इन द मॉइस्चर रिडक्शन इन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान भी कुछ हमारा श्रिंकेज होता है मॉइस्चर इन सीजन्स, एक वो हो गया। देन दिस इज अनएथिकल, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपका अनऑथोराइज्ड रिमूवल गोडाउन से चला गया, ये एक अलग सब्जेक्ट है जो हम प्रैक्टिकल पैरामीटर्स हैं दैट वी कैन डिस्कस। देन द मटेरियल स्पिलेज, rodents, पेस्ट एंड अदर वेस्ट, देन द डस्ट एमिशन फ्रॉम द ब्लोअर्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द वे स्केल। तो जो जो लास्ट के 5 हैं ये गुड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी विल डिस्कस मेनली इन द डिफरेंस इन रॉ मटेरियल इन एंड आउट। फॉर एग्जांपल हमने एक रेफरेंस फॉर्मुलेशन लिया जिसमें द मेज इज अराउंड 60% बाय वेट हैविंग 14 पॉइंट मॉइस्चर। Soya DOC is 25% in formulation having 9.5% moisture. DORB 10% in formulation having 9% moisture. Other materials like MBM, gluten 5% in formulation having 9% moisture. When we calculate all these equally in considering 1000 kg batch, 600 into 14% moisture plus 250 into 9% moisture, इसको सबको हमने एवरेज सम अप किया तो हमारा एवरेज मॉइस्चर इन बैच आ गया 12.125% एवरेज इन रॉ मटेरियल। तो 12.125% हमारा इन मॉइस्चर आ गया, और जो हमें आउट देना है वो हमें देना है 11 से 12% इन फिनिश गुड्स डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, area, shelf life and other feed millers requirement. So अगर हम फिनिश गुड का मॉइस्चर हमने कुछ फीड मिल्स ऑडिट की एंड फिनिश गुड का मॉइस्चर हमने देखा 10.5, 10.8, 10.9, हम 10.5% मॉइस्चर पर उसको हम कैलकुलेट करें, इन और आउट में जो आपका कैलकुलेशन आ जाता है 1.625%। और 200 टन पर डे अगर एक फीड मिल बना रही है और 1.625% श्रिंकेज अगर वो दे रही है फिनिश गुड्स में, एवरेज प्राइस हमने अगर 24 रुपए केजी पकड़ा, उसका डेली का लॉस 78,000 रुपीज है। सो रेंडमली आफ्टर एवरी 5th और 7th बैच हमको प्रोसेस पैरामीटर्स का सैंपलिंग लेना, देन मॉइस्चर चेक करना, देन उसको मेंटेन करना। तो इसके लिए काफी हमको चेक पॉइंट्स हैं, मॉइस्चर ऑप्टिमाइजर्स हैं, कंडीशनर्स में मॉइस्चर एडिशंस के और बहुत प्रोविजन है, मिक्सर में मॉइस्चर एनहेंस कर सकते हैं, हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं दैट हाउ वी कैन कॉप अप विद दिस मॉइस्चर श्रिंकेज। सो ये एक बहुत मेन पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल। वी कैन शेयर द डॉक्यूमेंट्स that what are the other checkpoints that helps to reduce the shrinkage in the feed mills. So that's all with my today presentation. If there is any questions, we can have a small discussion. Thank you, Harjot Singh sir. Thank you very much for your very insight. You can feel free to put your question in chat box, or you may simply unmute yourself and ask question. Anything Onkar Singh sir would like to add on his talk? एक्चुअली आई थिंक सबकी बोलती बंद हो गई है।
after going through such a detailed manner and what we are observing at our feed mills and what is being told, I think I don't know about the corporates and I don't know about the a poultry farming pellet unit or mash unit. I mean, it is a splendid work what he has done. Especially what I have seen in my careers of 4 decades, which I always say, and people feel bad, but this man has proved it. I always say that whatever you do, you document it, and I'm telling you this document, if if it is provided and if we even try to follow even 20-30%, our performance will improve and the cost of feed will go down. I'm 100% sure. Splendid job, splendid. Thank you very much. Thank you, sir. I can share all the documents with all the team members. We have many documents. Yes, I think if you see in Nepal or probably if you see in India also, many layer farmers must be having mash feed. Yeah, exactly. And even the Many out breeders. and also broiler farmers also must be having mash feed. Like Yeah, for example, in my case, I very have a true. mash also, but I buy mostly pellet feed. I mean, uh, not buy. I get it manufactured from someone else. So, if you can provide some document for the mash mill also, that will be. I mean, so thankful of you. sir, I just want to show one more document. We have a case study of a 1 lakh or 1.5 lakh farm size on a mesh and the pellet feed. Give me just 5 minutes. I will go through that document, sir. 1 second, sir. Okay, Please. before you ask, I mean, both the mash mill and the pellet mill made by you, or you had a pellet mill And and a somebody else had a mash mill? general case study with respect to the FCR, the benefit, the weight gain, and investment or return in mesh and pellet. Please share if it is possible. 1 second. I hope the host will allow us. I mean, Yeah, sure, sure, no problem. 1 second, sir. Because it's no, very constructive. this is something very like something like eye opener. Eye opener. Yeah, I personally feel wherever the cost and the efficiency is involved in some kind of a data, it it's just sticks to your mind. Oh, मेरा इतना पैसा बच जाता है, मेरा इतना performance improve होता है. Like with documents, some data if given, I think it is more fruitful. Hello. Yes, Is the screen is visible, sir? of course. Sir, one thing more, we document each and every article and put in our library and index. You can see the index number SOP LT36 sales. Yes, yes, We yes, have a yes. complete library in our organization, and this is general. There may be variations in the figure because this is a general feedback of few farmers and general study. There may be variations, but Fully we agree. yes, what we do, and but we got verified this document from 2 senior doctors and consultants. Then we put in our library. We have a case. We have a reference of farmer having a 1 lakh number of broilers, and land and building, raw material, warehouse required for both with feed plants, feed requirement, and that is the calculation. For a pellet feed of a 2 ton per hour, the cost, that document is four years back. Now the price of the feed mill may differ, but we can see the comparison.
For a feed miller, 1 lakh broiler, if he installs a pellet feed plant, that is the approx budget. Now this budget may be around 1.8 or 1.9, maybe. Almost double. Yes, sir. And then we calculate the same for the mesh feed, that is around 36 lakhs. Now this will be around 50 or 55 lakhs, say. Then the difference in the results. Then we took the difference in the input of 36 lakhs and 1.12 crore, the difference. Then we calculate 8% interest on this amount. That is the difference in operation. Then we noted down this. Then difference in operational cost. For a mesh, the processing cost will be around 400 rupees per ton. And for pellet, as we discussed earlier, the processing cost is around 900 rupees per ton. Then we calculate the difference of 400 rupees or maybe 500 rupees, that is 1 lakh per month. Total extra expenses per month, we add 1 and 2, that is around 1,50,000 rupees per month. In running a pellet plant instead of mesh plant, that is the additional amount that we need. Then we come to the benefits. We have a feedback of 10% reduction in feed intake of bird, 3% improvement in meat to bone ratio, improvement in live bird weight ratio, mortality rate. We ignore all the benefits. We just calculate the 10% FCR difference. Even from our feed mill in Pune, they are using our mesh feed with the FCR of with same formulation, same weather conditions, same farm size, FCR of 1.72. With the pellet feed, their FCR goes down to 1.56. We have a feedback from our client. And if we calculate the feed intake and the weight benefit, the benefit is of 6,25,000 per month, and additional cost is 1,50,000 per month. So when we calculate this, even calculating the interest over the pellet feed plant, small mini pellet feed plant, the additional benefit is around 4,75,000 rupees per month. But that document may be verified with respect to the market conditions, the raw material availability, and the practices of the farm. So this is a general document that we can share. Each and everyone can have their views over the document, and we can have a discussion over that. Actually, I very strongly feel that is why the first question I asked you, whether the pellet mill and the mash mill were supplied by the same company. Yes, sir. Yes, sir. Same. We did the. No. This pellet mill was the pellet mill was supplied by you, but who supplied the mesh our plant, sir. Or both were the your plant? Both of companies. Now this is number one option, because generally what happens, people try to compare the mash mill of a Batala branch and pellet mill of some foreign company. No, so sir, the both will not match. Number one. Yes, sir. Number two. This study was done almost probably 4 to 5 years back. Yes, sir. Yes. Today, even I run an integration business of maybe 30-40,000 a weekly I place. Even yes, my yearly average FCR is even not 1.58. Yes, sir. But I 100% agree that pellet mill should be there. At least minimum it should be there for pre-starter. Yes, sir. And during summer, you should give pre-starter and starter both in pelleting. In a pelletized format, because we are having like in our side of India, like I'm from the near Mumbai region, where temperature goes very high along with very high humidity. But today the mash plant, actually there is not much difference in the mash plant now. But lot of awareness has come in a feed miller how to operate
even that what you call that mash milling and how to operate what you call that pellet milling. That is how the difference between both are reducing. But the only actually the advantage of pellet mill is only one, that you can use multiple ingredients, Yes, sir. but not in And mash mill. also it reduces selective feeding and waste feed wastage handling. Yes. No, if you are able to procure, a number of ingredients which are at low cost, Yes, it sir. is always possible to do in pellet mill, but you cannot use more than 2 or 3 or 4 kinds of raw material in mash mill. That is the disadvantage. And main advantage of using 10 or 7 kind of a raw material will bring a very big impact on the prices. And even, sir, for especially for small farmers or they who do not want to sell commercially feed in the market, they just want to produce for their own farms. We specially introduce a small feasible pellet plant with just 2 ton per hour on pre-starter and 3 ton per hour on finisher feed, so that a 1.5 lakh farmer having 15 metric ton requirement of daily, he can produce his own feeds. Yes, I produce more than 15 tons a day. Yes, sir. No doubt about it. And what is the power consumption you need for that? So the power required is around the machinery is around 160 horsepower. In kilowatts, it is around 125 kilowatts. 125 kilowatts. I Yes. think that is achievable in my case. That is Yes. achievable in my. Actually, we have a lot of power issues. That is why I cannot go for pellet mill, because I have maximum, I think, around 75 kilowatts capacity in my area. I mean, Okay, sir. more than that, it is not available in my area. That is one of the constraints for me not having. But I'm really delighted for the documentations, what you have Yes, have sir. shown. It is something very remarkable. I mean, please continue. Sure, sir. I mean, Thank you, really a sir. big thumbs up to you. Big thumbs up to you. Thanks a lot, sir. I will share with each and everybody, and that's all due to the suggestions and the feedback from the big experience people like you and other. Suggestion given and companies. suggestion accepted are Yes, sir. two different things. You have Thanks a lot, sir. accepted and documented. That's so kind of you. That's Thank so you, kind sir. of. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Over to the host. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your all the hard work and for such beautiful details. You know, back to back 2 days. You are with us for I think almost 3 to 3.5 hours in total, and it means a lot for us. Thank you very much for your generosity, for your help. Thank you for being for making your valuable time available on such a short notice. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure, sir. And we look forward to cooperating with you in future as well to disseminate your expertise, knowledge, information over the feed milling technology. And we're really blessed to have you as a speaker, and we thoroughly enjoyed your presentation. Thank you, sir. My pleasure, sir. Thanks a lot. Thank you very much. If you can just send the materials which you can I will share. share. I will share, sir. And thanks a Through lot my- to the all members of this webinar for your patience and support. Thanks a lot, sir. Thank you very